Yes, we are live. Good evening, everyone. Welcome to PayU Edge. I'm Mansa Pandit. I take care of the events and offline marketing at PayU India. So, PayU, as you all know, is one of the leading payment service providers. We are across sectors like airline, SMB, and of course, the startup community. So, PayU Edge is a series that is owned by PayU. So, what we do here is talk about products, talk about different things that happen in the product ecosystem, and sometimes about topics like insurance here, for example. So today's session is on making insurance affordable, and we have a senior director of sales here, Nitin Pansari, along with Harsh Masta, who is the head of digital payments at PolicyBazaar. Over to you two experts to take this conversation forward. Thank you so much for being here with us today. And let's talk about making insurance affordable. Thank you, Nitin. Thank you, Harsh, for being here with us today. Thank you. Thank you, you. Mansa. I would like to extend a very warm welcome to Harsh. Thank you so much for joining. I know we are in March, it's the insurance season, so you must be very busy, but thank you so much for taking out time today. Just a quick introduction to all. Harsh is a veteran in the digital payment space. He has over 22 years of experience. He was with India Mart for almost 16 years and is heading digital payments at PolicyBazaar since last 5 years. So, while today's topic, as Mansa said, is making insurance affordable, right? Before we get into that, I would like to request Harsh to give our viewers a little bit of background on how insurance industry is, right? How has it grown? What is the landscape looking like? What are the different types of insurance and so on? So, Harsh, keen to hear from you. Yeah, thank you, Nitin. Thank you for the introduction. Thank you, and Nitin, for the opportunity. Hi, everyone. I am Harsh Vardhan Masta. As Nitin said, I am part of payments team for PolicyBazaar. So, as Nitin explained, so there is a lot of scope, Nitin, and there are so many insurance available in the market. You name for anything, and there is insurance for everything. But I want to put focus on majorly on two insurance that is very, very important. But one is health insurance and other is life insurance. Yeah. So looking at the awareness in recent time because of the COVID, despite that increase in awareness about health insurance, India is still grappling with a health protection gap of 73%, which is a huge. The lack of health insurance was due to lower penetration, coverage inadequacy, and rising healthcare costs. Factors also include a low perceived need for insurance, lack of product understanding, unavailability of customized products, high rates, and limited accessibility to customers. There is a 80% life insurance protection gap across the country. It further noted that mortality protection gap in the age 26 to 35 age group exhibit a protection gap exceeding 90%. Can you imagine? Which is a huge thing. That's huge. Yeah. 7 out of 10 Indians spend their entire income on health, on healthcare. 39 million Indians are pushed to poverty because of ill health. And another thing is 4 out of 10 people believe that the insurance premium are high. So this is the I think the current situation of the insurance, yeah, Nitin. And we have a lot of scope, and at PolicyBazaar we always believe that we should educate more and more people about the need of insurance. It's not a luxury; it's a necessity. I believe. Yeah. Absolutely. Thank you so much, Harsh, for laying down the context. Yes, insurance in India as compared to other markets and more developed markets is underpenetrated, right? But I was also reading the IRDA website, and they believe that in the next decade, India will become the sixth largest insurance market in the world, right? And Absolutely. Yeah. As per IIDA, by 2047, we should have 100% coverage. Wow. So, that and hence the need for insurance, right? I mean, even at PayU, we have a dedicated vertical and people, who manage insurance, the insurance sector, because while insurance to Indians is important,
now we'll come to payments in insurance, right? I mean, before we go into affordability and everything, right? Let's look at how whatever penetration is there, how do Indians pay for insurance, right? So when we look at our data, right, and Harsh will definitely like to know more since you're an expert. What it tells us is that people are prefer four payment modes, right? One, there is cards, which is credit and debit cards, which account for almost 40 to 50%. Then there is net banking, which is again 20-25%. UPI, right, which India has caught on, is around 20%. And then finally, EMI, which we'll talk about a little more, is only around 3 to 4%. Now, these are the figures for all the insurance merchants that we have, but obviously it may vary a little as far as PolicyBazaar is concerned. But I would love to know your take, how it is tracked. So I will tell you a different story. Okay. As I told you, there are different verticals of insurance. One is life, health, two-wheeler, Yeah. car. So Yeah. let me give you some facts. If you go for two-wheeler insurance, now recently in last 2 years, UPA has become the major payment mode. So almost 60 to 70% payments are happening through UPI. You, Right. When you then you will come to motor insurance. There also the almost 40 to 50% transactions are happening through UPI, which is a huge number. And when you come to high premium sector like health, there is a catch. There is a catch there because there people try to pay through EMIs, through EMI, yes. more modes of payment through which they can pay through monthly mode or a quarterly mode where the premium is high. वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे मोड से पेमेंट करें ताकि उनको थोड़ा बफर मिल जाए क्योंकि प्रीमियम थोड़ा हाई होता है. In case of life insurance, people only prefer mostly people prefer monthly mode because वो Okay. 20 साल 30 साल के लिए होता है तो everyone tries to pay on monthly mode ताकि उनकी वो पॉकेट फ्रेंडली रहे, पॉकेट पे कोई ज्यादा बर्डन भी ना रहे. तो द पेमेंट मोड्स ना यू हैव टू लुक एट द बिजनेस. आपको पहले बिजनेस देखना पड़ता है कौन सा बिजनेस है, किस तरह का टिकट साइज है, उसके बेसिस पे फिर we have to decide and offer the payment mode. Understood. So the Understood. trajectory is completely different. If you see in life insurance compared with two-wheeler is completely different, right? So Harsh, I understand two-wheeler because two-wheeler the ticket size may not be high, but when we look at four-wheeler, right? I mean, let's say you're purchasing a car of 10 lakh, 20 lakh, right? And there your insurance ticket size would still be high, right? 20-25,000. No. So I'm keen to know why UPI would be a preferred option in the motor insurance sector. So Nitin, here is also catch that in if you see in the recent years, now the premium will increase in motor insurance in coming years. But as far as renewal is concerned, right? As far as renewal is concerned, there the average ticket size is around 10 to 12,000, and mostly people prefer to pay UPI because it's very easy. If you see the numbers of transaction happening through debit card or net banking, it comes under single digit. Contribution is under single digit. So the ease of communication, the ease through, so you will be amazed that so many people on our website pay through QR codes on UPI. Am I correct to also say that merchants, and maybe not necessarily for insurance industry, but merchants prefer UPI because of the MDR reasons as opposed to cards? So see, we do not believe in that theory. We want to give each and every option to the user. Right. So we do not believe in the theory that MDR and other things. We want to give each and every option, the option which is most preferable to the customer, the option through which customer is okay to pay through. We are okay with it. I am saying now that there are different equation in different verticals. So it is not the thing that in two-wheeler we are offering UPI only payment option. We are offering each and every option. But you have to look at the ticket size. If the ticket size is under 15,000 or 20,000,
people are preferring UPI as a payment mode because nobody wants to use their debit card and net banking. So the user base of debit card, net banking come now prefer to pay through only UPI because the account is Only. Yes. common at the back end in all three modes, right? Absolutely. In fact, this is a trend that we have seen almost everywhere. The shift from debit card and net banking to UPI because of the ease and convenience. But as I also wanted to talk to you about how, while you very clearly explained how payment mode, users' preference differs basis the insurance category. Does it also differ basis markets? So, for example, people in tier one versus two, three, four, and deeper geographies. I mean, could you throw some light in that? I mean, first is insurance penetration vis-a-vis the markets, as well as payments in different markets. So let me tell you that the penetration of insurance has increased in last recent years in tier 3 and tier 4 cities. I think our rural reach is about 40% in the tier 3 and tier 4 cities. But there also you will be amazed the penetration of UPI is the highest. Right. Right. I can give you a use case, right? I can give you a clear example. So I can come on the I can give you an example on the this example on the affordability part. But see, you have to proactively also you have to also think ki if you are reaching. So the plus point of PolicyBazaar is that we have our own team, telesales team, and field on street team. So though they keep on talking to the customer, what are their needs, what are their preferable payment modes, and basis that we customize our payment modes and offer them Okay. to the Okay. customers. Yes. Okay. So I can give you an example of how we have customized various payment modes. Let me give you an example of UPI autopay, right? Okay. So UPI autopay launched by NPCI some time back, right? But Yeah. in life insurance earlier, what used to happen? We were offering the autopay to the customers on credit card, debit card, and Yeah. e-mandate through net banking. Yeah. So e-mandate through net banking is a very tedious process for a customer. So when we were reaching out to the customers of tier 3, tier 4 cities, they said they are using only UPI as a payment mode and they don't remember the username password of e-mandate. They very rarely use debit card, and Right. then started offering UPI auto pay in that particular business of life insurance. And you won't believe that it's almost 35 to 40% contribution of UPI auto pay in life insurance, which is a huge. And we are able to penetrate in tier 3, tier 4 cities because of this option. We users are able to adopt more and more insurance, and they are able to pay through UPI auto pay. It's very easy and simple. Interesting, Harsh. And we'll I will come to that. We are doing a lot of things on UPI as well. But before I dive into that, so thank you for putting it together. I mean, how insurance premiums, how the payments differ basis the markets and basis insurance categories. Now, you said that health categories obviously where affordability is, where the ticket sizes are higher. But how has the trend been? I mean, how has the ticket sizes or has the premium increased in health and life insurance over the years? So the premium has increased in last couple of years in the health sector because of the cost of health infra and Right. everything, because of the COVID effect as well. So the cost has also increased in the Cost. insurance sector. So there plays a major role of the products, affordable payment Oh, options. It correct, main correct, role correct. comes here. So I have a use case here as well. So we have one of the major success here as well. तो मैंने जैसे बताया था कि you have to proactively sense कि customers को चाहिए क्या, उसके हिसाब से आपको payment modes offer करने पड़ते हैं. Correct, correct. Example, great success story that we have a huge success story with PayU as well in terms of liquid loan जो हमने बनाया था. We have Yes. another success Yes. story. एक मैं success story बताता हूँ कि कैसे बिल्कुल. UPI ऑटो पे कैसे BNPL हमारा सक्सेस बना. तो हमें पता चला कि UPI एक
इंपॉर्टेंट फैक्टर जो टायर 3 टायर 4 कस्टमर्स को उनके लिए प्रेफर मोड है, इजी है पेमेंट करना, ठीक है। हाँ जी, अब कस्टमर्स को BNPL भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा हायर साइड पे होता है, राइट। हाँ, हाँ, So they wanted both the things. So what we have done, we club both the things. We reach out to okay, BNPL players. We said to them that you just register customers on UPI autopay at the back end, and through yeah, customer can opt for UPI autopay, and they can afford health insurance. So we talk to the customer, then we talk to the UPI BNPL players, then we work with payment gateways like PayU and others. Then we ask them to integrate this player at their website and make them their merchant, and through which we are offering service to our customers. So our penetration of has increased 10 to 12% after wow. these things. So, Working with BNPL players and UPI, after implementing UPI at the back end on BNPL. thanks, Harsh. I mean, thank you for It's PayU and policy. yeah, it's a very very practical success story कि आपको अगर Yeah, कोई प्रोडक्ट भी ऑफर करना है तो ऐसा ही नहीं कि कुछ आपको good, दिखाएंगे, लेकिन वो आपके बिजनेस को चलाएगा कैसे, वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे BNPL प्लेयर के साथ मिलके इसको इंटीग्रेट करके और कैसे आप ऑफर कर सकते हैं, और yeah, एट द एंड ऑफ द डे आपको कस्टमर्स की हेल्थ केयर एक नीड है, और उनको कैसे आप हेल्प हेल्प कर सकते हैं correct, correct. प्राइस पे एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। करेक्ट करेक्ट सो हर्ष थैंक यू सो मच आपने टच किया पेयू के बारे में हाउ पेयू हैज हेल्प पॉलिसी बाजार और हमारी द पार्टनरशिप dates back for almost 8 to 10 years, right? Or during this time we have built a lot of products. So if I talk about affordable payment options, right, PayU provides on PolicyBazaar itself, right, several options like credit card EMI, obviously wo to hai hi. It's a most preferred option by customers who have credit cards. We also have debit card EMI, cardless EMI. So customers को हमने ना सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपने कहा कि you have to give options to consumers to make your life better, right, and make their life better. तो हमारे PayU takes pride in having the largest coverage in terms of issuers that are our partners, and they give affordable options to your customers, right? So उसी में मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि despite so many options, right, हमने ये देखा है जो आपने बोला, राइट, डिफरेंट टाइप्स इंश्योरेंस हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस में EMI ऑप्शंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट और वो चलता भी है, राइट, कस्टमर्स को चाहिए, टिकट साइजेस आए हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस इज स्टिल अ सेक्टर जहां पे वो नहीं चलता है। अब आपने बोला कि वहां पे लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि वो काफी लंबा चलता है, कस्टमर्स जनरली प्रेफर टू टेक मंथली option rather than annual. But I know from personal experience कि I also have life insurance for myself family. मैं तो annually लेता हूँ। इस केस में can you suggest something? How can we increase or offer new solutions to customers who are taking life insurance policies and where affordability can play a key role? सी देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस इज मंथली मोड, प्रेफरली वी हमारे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस is being sold through monthly mode. So Okay. the biggest opportunity I can tell you as a payment service provider through which you can help country and people is we have cracked another big thing, that auto pay on international cards. The users sitting outside India, they Right. wanted to opt for life insurance, or they do want to invest ULIP policies, they want to invest in savings. So here is another big thing which we have cracked. We have worked with partners, like we have also worked with PayU as well, and we have Yeah. given feedback to PayU as well. Huge opportunity. People outside India, NRI customer wants to avail Purchase for their parents. life insurance, Right. and here is a big cash. If you can offer, so we are accepting payments through 100 plus countries on life insurance, which Okay. is both Wow. in term and savings. So I think the payment mode will be monthly mode, but we have to look out कि कितने और तरीके से हम कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। जैसे यूपीआई ऑटो पे हो गया, हम ई मैंडेट ऑन आधार का भी पेनिट्रेशन काफी देख रहे हैं, राइट। रूरल एरिया कस्टमर्स का जो अकाउंट है वो आधार पे लिंक्ड है, तो अभी जो एनपीसीआई का जो ई मैंडेट ऑन आधार है वो बहुत ईजी है, राइट। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे हम डेबिट कार्ड पे भी एक ई मैंडेट वाला ऑप्शन बहुत ईजी है, आपको
डेबिट कार्ड का पिन डालना पड़ता है और आप इमेंडेट रजिस्टर करा सकते हैं। एक आपको नेट बैंकिंग पे इमेंडेट मिलता है, ठीक है, आधार पे हो गया, मंथली मोड, ऑटो पे उन कार्ड्स अब काफी ज्यादा अच्छा हो गया है जब से एसआई हब का प्लेटफॉर्म आया है। अब यूपीआई ऑटो पे आ गया, जैसे अब हमने यूपीआई ऑटो पे क्यूआर कोड पे स्टार्ट किया है, वो भी एक बहुत बहुत ही अमेजिंग है, मतलब कस्टमर्स आर वेरी, क्योंकि क्यूआर कोड से अब सबको एक हैबिट सा हो गया है। सो नहीं, थैंक यू सो मच। ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कार्ड्स पे हमारा भी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल कस्टमर्स पे हमारा भी बहुत बड़ा फोकस है। हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मल्टी करेंसी पेमेंट, हम उसको शॉर्ट में एमसीपी बुलाते हैं, वेयर कस्टमर्स इन अ डिफरेंट कंट्री कैन पे यूजिंग द करेंसी ऑफ देयर चॉइस, राइट। तो यहाँ पे तो रुपीज में होता है, बट कस्टमर्स कैन प्ले इन डॉलर्स, यूरो, व्हाटएवर, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आई एम श्योर हमने आपको दे ही रखे हैं। कमिंग बैक टू अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस, मैं क्योंकि आपने यूपीआई के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं कुछ लाइट थ्रो करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि पेयू क्या कर रहा है, राइट। आपने कुछ बताया यूपीआई ऑटो पे, ई मैंडेट वगैरह, 3-4 ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जो हर्ष हम भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए और इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, राइट। एक हो गया ईएमआई वाई यूपीआई। सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, क्योंकि आपने बोला यूपीआई का मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है सारे मार्केट्स में। ईएमआई वाई यूपीआई इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये अभी तक इंडस्ट्री में आया नहीं है। लेकिन एनपीसीआई, हम एनपीसीआई और सारे इशूअर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, बैंक्स के साथ, कि कस्टमर जब यूपीआई पेमेंट करता है, राइट, वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, दे आर परचेजिंग यूजिंग यूपीआई, वो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, दे कैन within their app itself they can select the tenure options, right, and get that transaction converted to EMI. So ये एक प्रोडक्ट है जिसमें हम बैंक्स और एनपीसीआई के साथ काम कर रहे हैं, ये हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा, सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हो उसके बारे में? I go with you and I think credit on UPI can be a game changer. करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक प्रोडक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अडॉप्शन में, बट we are about to do our first launch with one bank very soon, and gradually हम सारे banks के साथ within the next 6 months will be there. Another one is down payment plus EMI. तो अब इसमें हमने क्या देखे ना, अफोर्डेबिलिटी में भी काफी सारे कस्टमर्स नहीं ऑप्ट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट लगता है उनको, दे डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। तो हमने जैसे मोटर इंश्योरेंस, मोटर जब आप खरीदते हो, ऑटो खरीदते हो, तो यू पे 20% डाउन पेमेंट, 80% फाइनेंसिंग। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई लेके आ रहे हैं, विच विल मेक द इंटरेस्ट बर्डन easier for the consumers, right? You can pay some down payment and rest you can convert to EMI. तो एक ये है। और एक आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम मिले थे, आपने बताया, आपने जैसे लिक्विड लोन्स के बारे में बताया, आज भी अगर मैं देखूं कितने कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड वुड बी अराउंड 10 करोड़, राइट, जहां पे ईएमआई ज्यादातर होता है। बट जो इंडिया की मैक्सिमम लोग पेनिट्रेशन है, 80 करोड़ जो 90 करोड़ लोग हैं, दे डू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड्स, राइट। नाउ इन लोगों को भी फाइनेंसिंग चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट इन द ऑफलाइन वर्ल्ड, जिसको हम पेपर फाइनेंस कहते हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑनलाइन, राइट, कि आप आए प्लेटफॉर्म पे, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे साथ लेंडर्स रहेंगे, हम उन लेंडर्स के साथ आपको ऑन द फ्लाई आपको हम लोन दे सकते हैं, राइट। तो दिस इज अनदर प्रोडक्ट जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब और कोई पेन पॉइंट है जनरली इंडस्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में, जो आपको लगता है कि हम एड्रेस कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि कस्टमर्स को पता होना चाहिए? I think the biggest challenge for us is to how we can educate more and more people about insurance. Once which that is cracked, I think there are enough payment options, and we have to work on it. There are much more to do, but presently we have enough payment option. But I think education is the one thing that we have to do on a large scale. That insurance is a must thing, and it's a very good proposition for not for an individual, for individual family as well. So I think, और जैसे आपने बताया credit on UPI or the ways by which we can do financing more and more ways. See, we have to enable users. We have to empower customers through which they can empower their purchasing power. So जैसे आपने बोला कार्डलेस EMI है, कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि उनके अकाउंट में विदाउट डेबिट कार्ड दे कैन ऑफर EMI
सी वो एजुकेशन मैंने जो आपको बोला कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है एजुकेशन, हम कस्टमर्स को यही नहीं पता कैसे वो ले सकते हैं, वो काम भी अपना ही है, हमें ही करना पड़ता है। बिल्कुल उनको बताना पड़ता है, देखिए आप ऑटो पे से ले सकते हैं, चाहे क्रेडिट ऑन ईएमआई से ले सकते हैं, चाहे आप बीएनपीएल, चाहे बजाज फिनसर्व हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके थ्रू कैसे आप ले सकते हो, एक्सियो है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट आपको वो एजुकेट करना पड़ता है कस्टमर्स को कि आप कैसे विदाउट हैविंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कैसे अपने आप को एनेबल एम्पावर कर सकते हो थ्रू फाइनेंसिंग, आप कोई भी चीज, नोट इंश्योरेंस, कुछ भी आप ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हो। तो मेरा मानना मेरा एक पॉइंट था, देखिए हमें क्या लगता है कि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर जब आप आया है आपके प्लेटफॉर्म पे, वो पॉलिसी खरीद रहे हैं, उस समय उसकी थॉट प्रोसेस है कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए वगैरह वगैरह, वो पेमेंट के बारे में शायद बाद में सोचता है, लेकिन जब तक वो पेमेंट पेज में आता है तब तक मतलब वो ऑलरेडी डिसीजन बना चुका होता है। हमने ना एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी विजेट। तो ये विजेट क्या, ये एक टूल है जो कस्टमर आपके पेज पे, वो कस्टमर को सारे ईएमआई ऑप्शन, सारे कार्ड ऑप्शंस, वो सबको दिखा सकते हैं, राइट। तो जो आपने बोला अवेयरनेस, जैसे डेबिट ईएमआई, कार्डलेस ईएमआई, बैंक्स ने मिलकर करीब 5 से 7 करोड़ कस्टमर्स को ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है, राइट। तो इस विजेट के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि कस्टमर जब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसको वहीं पे पता चल जाए कि कोई बात नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड ईएमआई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डेबिट ईएमआई या बजाज फाइनेंस या जेस्ट मनी, जितने भी और ईएमआई ऑप्शंस या हैं, या जितने भी और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, मैं उससे पेमेंट कर सकता हूँ। टोटली एग्री दैट इज, मतलब मैं वही चीज बोल रहा था, वी हैव टू एजुकेट एज ए मर्चेंट, आवर रोल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द कस्टमर कि हाउ ही कैन परचेज any insurance which he is willing to buy, through which mode, the best available modes which is having, he can purchase, yes. So हमारे वही मैं बोला कि हमारा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे बीएनपीएल को स्केल करना है, यूपीआई ऑटो पे को स्केल अप करना है, किसी भी पेमेंट मोड को, ये खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक पेमेंट मोड बनाया, लेकिन वो मर्चेंट की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एजुकेशन, जब तक मर्चेंट, क्योंकि एंड यूजर के साथ मर्चेंट ही इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। और अगर हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करेंगे कि ये ऑप्शन ऐसे भी चल सकता है, थ्रू इस ऑप्शन के थ्रू आप ऐसे भी परचेज कर सकते हो, तो वो एक नेक्स्ट लेवल स्केल कर देता है किसी भी पेमेंट ऑप्शन को। और हर्ष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने बताया था कि आपका बिजनेस जनरली एजेंट ड्रिवन होता है, राइट? मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एंड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा, लाइफ क्योंकि एंड इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपने, वैसे तो आपके प्लेटफॉर्म है एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि कस्टमर आके वहां पे डिफरेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी चेक कर सकता है, बट आपके एजेंट, आई एम श्योर दे वुड बी प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल इन एजुकेटिंग द कस्टमर्स, क्योंकि ऑनलाइन जो कस्टमर आता है वो तो इट इज लाइक मोर सेल्फ अवेयरनेस, आपने डिस्कवरी किया एंड ऑल दैट, लेकिन आपके एजेंट्स विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल. Our idea is very simple. We firmly believe that we should offer the best product to the customer. That's it. We should educate first, and then we should offer the best product to the customer. That was great, Harsh. I think हमारे audience की तरफ से भी I think there are certain questions मैं आपसे पूछना चाहूँगा. First question is, do you guys think premium financing is an important step in reaching the last mile in terms of insurance penetration in India? ये मैंने पहले ही बताया था कि it's very 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 critical, and we have to find ways how we can more and more empower people to purchase insurance premiums. It's a very, मैंने वो BNPL का example भी दिया, आपने भी एक example दिया. So this is very very critical, and we are working with so much, मतलब XZO हो गया, DMI finance हो गया, pyramid finance हो गया, cardless EMIs होगी, तो we are working, I think. Correct. इसी का follow up question है, how can a customer make premium payment affordable if he doesn't have a credit card? तो यहाँ पर हम इसकी बात कर ही रहे थे कि तो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, आई मीन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इफ यू डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड. हम डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई देते हैं, हमने पार्टनर किया करीब 6-7 बैंक से, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह. कार्डलेस ईएमआई एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप बजाज फाइनेंस, जेस्ट मनी जैसे एनबीएफसी से भी आप लोन ले सकते हैं. हर्ष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यूपीआई ऑटो पे है जो कि बहुत ही सिंपल है. करेक्ट. ठीक है, आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस थे हर्ष. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. आपने बहुत सारी चीजों के बारे में टच अप किया कि
how different sectors जो होते हैं उसमें कैसे payments होता है, UPI auto pay का कितना बड़ा रोल है, new products कैसे हम और हमें launch करना चाहिए, क्या pain points है. It was great speaking to you, Harsh. I hope Thank you you. had a good time during this My conversation. pleasure. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you. To our viewers, thank you again. Thank you for joining us. We will come back with another round very soon. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye.